अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सर फारूक का। वो कह रहे थे कि प्रेजेंट करेंगे वो। सर तला आप लाइव आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जी, मैं कह रहा था कि सर फारूक का 1-2 मिनट इंतजार कर लेते। जी सर ठीक होगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ही विल प्रेजेंट बट इट सीम्स लाइक ही हैजंट जॉइंड एंड इट्स बीन 5 मिनट्स। तो यस। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइमर सेट कर लेंगे। लेट्स से लेट्स सेट इट फॉर 10 मिनट्स, ओके, फॉर क्वेश्चन। एंड बाय द वे, प्रिपेयर मैंने इसलिए नहीं किया क्वेश्चन कि आई वाज रिलाइंग ऑन द अदर इंस्ट्रक्टर, but that's fine. I think we can just start and figure out how this question is supposed to be solved. Okay, so given root of a binary tree, flatten the tree into a linked list. The linked list should use the same tree node class where the right child pointer points to the next node in the list and the left child pointer is always null. Okay. तो आपको एक रूट दिया जाता है बाइनरी ट्री का, उसको आपने फ्लैटन करना है ट्री को into a linked list. The linked list should use same tree node class, okay, where the right child pointer points to the next node in the list and the left child pointer is always null. Okay. The linked list should be in the same order as pre-order traversal. Linked list should be in the same order as pre-order traversal of a binary tree. So it seems like they're asking us to flatten this binary tree into this order. Okay. So if you were to do a pre-order traversal, how would we go? We would go to the left, to the right, and then back to the root, right? And while we are at that node, we would process that node. ऐसा है नहीं pre-order में left, right, and then root process होता है. No, आपके पास ऑर्डर यही होता है, लेकिन इसमें आप स्टोर जब आप लेफ्ट पे होते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं इसको. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं 2 पर हूं तो 2 पर मेरे पास क्या है, ये भी एक रूट है, राइट? तो जैसे मैं रूट पर हूँ तो रूट को मैं प्रोसेस कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, ठीक है. फिर 2 पे मैं आता हूँ, 2 मेरे पास लेफ्ट पे है तो इसको मैंने यहीं पे प्रोसेस कर लिया. इसी तरीके से मैं राइट पे जाने के बजाय लेफ्ट पे जाता हूँ
इसको प्रोसेस कर लेता हूँ। वापस आते हुए मुझे इसको दोबारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। वापस मैं जाकर राइट पे जाऊंगा, राइट। तो राइट को मैंने प्रोसेस कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आगे चलता चला जाऊंगा एंड मेरे पास वापसी पे 5 और 6 आ जाएंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक इनपुट दिया है और इसमें इन्होंने नल्स को भी रिकॉर्ड किया है, ओके। तो क्वेश्चन को एक मरतबा दोबारा से हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने नल की बात लेफ्ट के लिए क्यों की है। गिवन रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, फ्लैटन द ट्री इनटू अ लिंक लिस्ट। इस ट्री को हमने फ्लैटन करना है इनटू अ लिंक लिस्ट, ठीक है। हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसका हेड आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और इसका जो नल है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद कह रहे हैं कि द लिंक लिस्ट शुड यूज द सेम ट्री नोड क्लास where the right child pointer points to the next node in the list and the left child pointer is always null, ओके। तो इसमें हमारे पास जब भी हमारे पास हम जब भी राइट वाले पॉइंटर को यूज करेंगे तो उसको हम नोड्स ऐड करने के लिए करेंगे, और जब किसी भी नोड का जो लेफ्ट होगा दैट विल पॉइंट टू नल, ठीक है, ताकि ये हमारे पास माइनस होता जाए। और राइट पॉइंटर को हम पॉइंट करते जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट नोड। जी जिनत। जिनत, आपने कुछ पॉइंट था यहाँ पे? जी सर। सर मैंने पूछना था यहाँ पे हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल है, तो हम इसका ट्रांसवर्सल पहले हम रूट लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस हमारे आई पास थिंक। प्री ऑर्डर है। जी जी बिल्कुल। प्री ऑर्डर, आई थिंक ओके प्री सर। ऑर्डर और इन ऑर्डर रिवर्सल सेम ही है। फर्क इतना है कि इन ऑर्डर रिवर्सल में आपके पास पहले लेफ्ट वाला प्रोसेस होता है, मतलब जाते तो आप उसी तरीके से ही हैं, लेकिन स्टोर आप जब एलिमेंट को करेंगे तो आप लेफ्ट वाले को पहले करेंगे, फिर आपके पास रूट प्रोसेस होगा, फिर आपके पास राइट वाला नोड प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या होता है प्री ऑर्डर में कि जब आप नोड पर हैं उसको उसी वक्त प्रोसेस करते हैं, ताकि जब आप वापस रूट पे आए तो दोबारा उसको प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। ओके सर, थैंक यू। Yeah. तो अब इसको किसी भी नोड पे अगर मैं, ओके ऐसा करते हैं, काम करते हैं। हम्म, यहाँ पे इन्होंने इसको किस तरीके से बनाया। प्री ऑर्डर में इन्होंने 1 को प्रोसेस किया, लेफ्ट को अगर इन्होंने नल किया, राइट, अगर इन्होंने लेफ्ट को नल किया तो राइट पे इसका 2 तो नहीं आता, तो इस लेफ्ट को नल नहीं कर सकते, बल्कि आपने करना ये है कि अच्छा वापसी पे आके फिर, ओके आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक काम करेंगे, पहले एक डमी नोड बना लेते हैं, ठीक है। डमी नोड की कोई वैल्यू नहीं है, और इसको मैं हेड नोड कह देता हूँ, और इसका एक ही पॉइंटर है, ये पॉइंट करेगा 1 को, ठीक है। और 1 के बाद आप यहाँ पे फिर ट्रेवर्सल शुरू करेंगे 2, और सर ठीक है ना, 2 का अभी 2 आएगा, तो 2 के लेफ्ट में हमारे पास 3 है, तो 3 आएगा, क्योंकि हमने इसको बनाना है फ्लैटन। ये फ्लैटन फिर हम बनाना तो दोबारा है 2 पे बट ये, जाएंगे। नहीं हम्म सर, उसके बाद हम दोबारा 2 पे जाएंगे, अभी 2 के राइट पे 4 है, तो 4 आएगा। no, actually they've said something very important. If you see the answer, what do you see in the answer? You see null, right? So, and if you look at the statement, what they're saying is the linked list should use the same tree node class. Okay, it's going to use a tree node class. So let's take a look at what the tree node class is doing. We have to move with clarity. This is my tree node class. It has a left and a right pointer. Okay. The linked list that I'm going to create, this one, it's going to use the same tree node class, which means my linked list will be created using the same tree node.
and it's going to have a left and a right. Left, I will always point to null, and right, I will always point to the next element with the traversal, next node in the list. So this will form the list through the traversal. Now, if you look at this output here, after every process node, they are pointing to null. So highly likely what they're referring to is that this is your linked list. This is your linked list where one has a right pointer, which is pointing to 2, and a left pointer pointing to null. Okay, left pointer pointing to null. Similarly, when you come to 2, the 2 has a right and left pointer again pointing to null, and right pointer pointing to 3. And this is how you need to go about it. And at every node, you process the current node. Okay. So what I'm trying to understand is if I form a new linked list, essentially what I'm doing is I use the same tree class node. इन्होंने जब कहा ना ट्री क्लास नोड, तो उसमें कह रहे हैं कि आपको रिटर्न क्या करना होगा, किस टाइप का डेटा. I don't think they're asking. What they're asking is they're asking to use the existing tree. Okay, they're giving you the root of the tree and flatten it. Okay, so you cannot create a new linked list and return it. You have to flatten the existing binary tree. So how do we go about it is, I think we have to find a creative way to do these things. Okay, let's look at another example. Okay, there are not many examples actually. This is pointing to left and this pointing to right. Okay. If I come to left, should I point the right pointer of 1 to null? If I do, then what's going to happen is this is going to get deleted. I cannot do that, right? So what do I need to do to flatten a binary tree? Or what I can do is I can write operations in a way where once I point my current node to the next node, then I point its right pointer to null. Sorry, left pointer to null. That way I'm not deleting anything. Okay, so we're repointing the nodes to other nodes. And then we're pointing the current. So like, look at this 1. Okay, if 1 is pointing to 2 and 1 is pointing to 3 at the same time, in that case, I have a left and I have a right. So if I want to make it into 1, 2, 3, I need to find a way where 2 can point to 3. That way 3 is not deleted and 1 ends up pointing on the right side to null. Or if we do it vice versa, I can do 1, 2, 3. This is left, this is right. Left should point to null. First, what you should do is point 2 to 3. So it becomes 1, 2, 3, and the left points to null instead. Okay, how do we do this? How do we do this? If we do pre-order traversal, the linked list should be in the same order as the pre-order traversal. Okay. If I'm taking this node, I'm coming here. Okay, here's what I'm going to do. Okay. Once I've processed a left node, I have to save it somewhere. And then I go to the right. After right, I point that and the root, I need to point that to the right before I go to the right. Okay. So something like this. 1, 2, 3, and 4. Okay. अगर मैं इसके लेफ्ट पे आता हूँ, लेफ्ट पे आने के बाद इसको मैंने प्रोसेस किया, वापस मैं रूट पे आया और रूट को मैंने अगर मेरे पास इस तरीके से है, अगर मैं एक लिंक लिस्ट के अंदर अपना एक नोड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ,
So what I need is I need to point 2 to 3 and then 3 to 4. नोड इंसर्शन का हमने क्वेश्चन लिंक लिस्ट में किया हुआ है पिछले वाले कोहॉर्ट में। तो उसमें आई थिंक ये होगा कि हमें टेम्पररी लेफ्ट वाले को स्टोर करना होगा। यस, लेफ्ट वाले को स्टोर करेंगे, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। जब हम राइट वाले पे आएंगे तो राइट वाले को पहले उस स्टोर्ड लेफ्ट वाले पे हम पॉइंट करेंगे, उस स्टोर्ड लेफ्ट वाले को फिर हम राइट पे पॉइंट करेंगे, एंड देन विल कम बैक एंड विल रिपीट द सेम थिंग। आई थिंक वी आर मेकिंग सेंस नाउ। और री एक्सप्लेन दिस, ओके? ऐसा करेंगे, ठीक है? हम जब लेफ्ट पे जा रहे हैं ना, ठीक है, किसी भी लेफ्ट पे हम जा रहे हैं, तो जैसे अब यहाँ पे हम लेफ्ट पे आए, राइट? जब हम लेफ्ट पे आते हुए नल पे जब हम पहुंचे, ठीक है, नल पे पहुंचे, तो वापस आते वक्त मैंने एक डमी नोड में 3 को स्टोर कर लिया, ठीक है। यहां से मैंने 2 को पॉइंट किया, किस पे? नल पे पॉइंट कर दिया। मींस अभी यहां से डिलीट हो चुका है, लेकिन डमी में मेरे पास अभी तक है। अब मैंने क्या करना है कि इस वाले को भी मुझे स्टोर करना होगा, इस वाले को भी मुझे स्टोर करना चाहिए। मेरे पास 2 है, मेरे पास डमी नोड है, राइट, एंड देन मेरे पास 4 है। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? 2 फिलहाल 4 को पॉइंट कर रहा है, ये डमी नोड को पॉइंट करे एंड देन डमी नोड 4 को पॉइंट करे। ओके, अगर मैं इसको, अगर डमी नोड के मेरे पास 2 पॉइंटर्स हैं, तो डमी नोड कैन point to 4 at the same time, and it can point to 2 at the same time. Okay, and then all I do is I don't point. Okay, what if tree node की क्लास को यूज करके मैं एक डमी नोड बनाऊं? तो ट्री नोड का मैं क्लास यूज करके डमी नोड बनाया मैंने, उसमें मेरे पास एक लेफ्ट था, एक राइट था, ठीक है। उसमें मैंने 3 को स्टोर किया हुआ था, यहाँ मेरे पास 2 है, 2 इज पॉइंटिंग टू 4, राइट। तो अगर मैं इसके राइट को 4 पे पॉइंट करूं, ठीक है, राइट को अगर मैं 4 पे पॉइंट करूं, तो यहां से तो अटैच हो गया। अब मैं 2 को यहां से डी अटैच करूं, यानी 2 को मैं री पॉइंट करूं टू 3, तो यहां से खुद ब खुद से टूट जाना चाहिए, एंड देन दिस बिकम्स 2 3 4। So if I point 2 to null and then point 2 3, I think this will work. 2 3 4, and that's how I'll have flattened this into 1 2 3 4। ये पोर्शन तो हो गया, ठीक है। वापस रिटर्न होते वक्त अब मैंने यहाँ पे, मेरे पास 4 है लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो अब मैं राइट पे जा रहा हूँ, तो एज लॉन्ग एज वी आर गोइंग टू राइट वी कैन जस्ट कीप रीपॉइंटिंग। अब 4 चूंकि 1 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हाउ कैन यू डिटाइच दिस फ्रॉम? ओके, कैन वी जस्ट पॉइंट डायरेक्टली टू दिस? इसी चीज को अगर हम, फिर 2 पे मैं जब आया तो मेरे पास ये रिलेशन था, अब 1 पे मैं जब वापस आऊंगा मेरे पास 1 और 5 के दरमियान ये रिलेशन है। So what I will do is I will point between 1 and 5. Yes, I'll do the same thing. I'll do the same thing. क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट नहीं है, ठीक है। इससे भी मैं यही चीज रिपीट करूंगा, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। 1 और 5 को लेते हैं, ठीक है। 1 और 5 को लेते हैं, 1 is pointing to 5 and I have 1 2 3 4 as a linked list pointing to null for now. What we need to do is we need to use a dummy node, store 1,
Okay, store 1 and 0.44 is currently having 2 left and right. Left and let me draw this clearly so everyone can understand where I'm trying to go. यहाँ तक मैंने अगर बना लिया है that doesn't mean कि अब मेरे पास एक ही पॉइंटर है क्योंकि ट्री नोड की क्लास यूज कर रहे हैं तो they all have a left pointer still that's pointing to null. Okay. Okay. So the only difference at when we arrive here, the only difference जब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि this is until this is formed, जब तक ये form नहीं होता तो 4 is still 2, 3, 4, it's pointing null in two directions. Okay, because all of them are tree nodes, binary tree nodes. Okay, they're all pointing to null. So what I can do is अब मैंने यहाँ पे आना है मेरे पास 1, 5 और 6 है ठीक है they're pointing to each other like this तो मैं 4 को पॉइंट कर देता हूँ 4 को पॉइंट कर देता हूँ मैं 5 पे इसका राइट पॉइंटर मैं 5 को पॉइंट कर दूंगा and then this needs to point to null. Sorry, 1, 5, and then I have a node 4. How can it go in between this? While I'm returning, I'm going to write okay, does it need to be, they're saying it should be in the pre-order. Yes. सर मेरे जहन में एक सोल्यूशन आ रहा है ये स्क्यूड है ना राइट इट्स स्क्यूड टू राइट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रूट लेफ्ट राइट तो हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे अब जो हमारा रूट है पहले तो उसे हम स्टोर करेंगे एंड हम रूट डॉट लेफ्ट को नल कंसिडर करेंगे एंड सर आप रूट गलत जा रहे हैं हम लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते अलग से लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते ये क्वेश्चन की कंडीशन है एग्जिस्टिंग ट्री को फ्लैटन करना है वो खुद ही इसको प्रोसेस करेंगे वी कैंट इवन रिटर्न एनीथिंग दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इफ यू लुक हियर okay so the only option we are left with is trying to repoint the two pointers of each of these nodes in the correct manner ठीक है यहां तक तो समझ में आ गई कि लेफ्ट पे मैं जब जा रहा हूं वापस आते वक्त आई पॉइंट द रूट टू नल ऑन द लेफ्ट एंड देन जो उधर से मुझे नोड रिटर्न हुआ था उसको मैं राइट पे पॉइंट करूं बट दैट नोड शुड आल्सो नॉट कैंसल आउट लाइक इस केस में यहाँ पे अगर आप देखें ये जो है क्या कहते हैं 1, 2 को पॉइंट कर रहा है ठीक है 2, 3 को पॉइंट कर रहा है 3 नल को पॉइंट कर रहा है ओके अब इसका लेफ्ट तो okay hold on maybe I'm not even looking at it right the left of this 3 is already pointing to null okay so all we have to do is process this इसके राइट पे मुझे यहां से राइट फेच करके इसके राइट को पॉइंट करूंगा मैं 4 को अच्छा फिर वापसी पे आके मैं यहां से जो राइट होगा यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया ठीक है अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाना चाहिए अब मैं जब यहाँ पे राइट पे आऊंगा इसका भी एक लेफ्ट और इसका भी एक राइट है तो इसके राइट को पॉइंट करूंगा 5 पे फिर 5 पे अपना पॉइंटर में मूव कर दूं
तो फिर 5 पॉइंट करेगा 6 को। आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। प्री ऑर्डर रिवर्सल के इसमें ऐसे ही रहेगा ना। मुझे इसको पूरा उठा के वहां लगाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट्स वेयर वी वेंट रॉन्ग। डज इट मेक सेंस? यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ रूट से स्टार्ट करूँ मैं, ठीक है, और मुझे प्री ऑर्डर रिवर्सल करना है, तो हर एक मैं प्रोसेस करता जाता हूँ और हर एक के मैं लेफ्ट और राइट की का टेक केयर करता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 के लेफ्ट पे आया, ठीक है, लेफ्ट पे आया मैं। लेफ्ट को मैंने नल कर दिया, ऑलरेडी नल है, ठीक है। इसके राइट को मुझे कुछ अटैच करना है, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँ, राइट। तो इसको मैं पॉइंट करने के लिए, इसके राइट को पॉइंट करने के लिए रिटर्न से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मैं पॉइंट करूँ। सो 3 के बाद जो आना चाहिए वो 4 है, लेकिन 3 के बाद मुझे नल लगाना पड़ेगा, नल स्टोर करना पड़ेगा। सो कैन वी, बट विल हैव टू रीपॉइंट विद इन द सेम ट्री। उसको कैसे करेंगे? रिटर्न करते वक्त इसका एड्रेस हम ले लें, ये जिस तरह जो पॉइंट करना चाह रहा है, इसके एड्रेस को यहाँ पॉइंट कर दें हम। आई थिंक दैट्स हाउ वी कैन डू। हम्म, आई थिंक दैट्स समथिंग वी कैन डू। 1 पे आओ, 1 को प्रोसेस करो। 2 पे आओ, 2 को प्रोसेस करो। 3 पे, 3 पे जब हम नल पे पहुंच चुके, ठीक है, जब लेफ्ट पे हम नल पे पहुंच चुके, 3 के पास अभी 2 ऑप्शंस हैं, अभी फिलहाल दोनों नल है, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, राइट। तो ये मेरे पास लेफ्ट है, ये मेरे पास राइट है। मैंने इसके राइट पॉइंटर को लेना है, एंड इट हैज टू बी पॉइंटेड टू द वैल्यू फ्रॉम हियर। तो व्हाट इफ वी कैन डू a level order traversal? That will give me the 4 as well. But then I need to point 4 to 5. So 5, 4, and 5 are not at the same level. So that's ruled out. Pre-order traversal we have to do, but how do we point its right pointer to 4? Maybe while returning. What if we do post-order traversal? We do left and right and then root. No, that won't work. So pre-order reversal we have to do. So left, right, जैसे रिटर्न होके राइट पे विजिट किया, return last node, and the last node's right pointer points to the next node that's being processed. So last node का node dot right points to the next traversal, whatever that is. That is 4. It's going to point to 4. Then we take this one. This is again, this is the last node. Okay. इसका जो right है, that should point to the next right iteration, the next right recursion. So that points to 5. And then ये last वाला है, इसका जो right है, that will automatically point to dot right. So every last node that we hit where it's null, wherever you find null, you take the right pointer of that and point it to the next recursive call, whatever node it returns. And then when that hits null, then you look for the next right and point it there. Once you point it there, its left should point to null. I think that's how we can do it. जी, बाकी लोग वोट करें इसको. What do you think we're missing here?
सर यहाँ हम ये कैसे इंश्योर करें कि हर जो नोड है उसका लेफ्ट ही नेक्स्ट नोड से सॉरी राइट ही नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड हो? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये है लेफ्ट और राइट है, तो मैं जब भी कोई नोड लेता हूँ, यानी कि रूट डॉट राइट या रूट डॉट लेफ्ट में लेता हूँ, आई थिंक नोड डॉट राइट नोड डॉट लेफ्ट कर सकते हैं इसको। तो दैट्स हाउ आई एम फिर इंश्योर। हम डिफाइन कर सकते हैं कि लेफ्ट जब भी हम लेंगे उसे नल कर देंगे और जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा राइट में जाएगा। जो भी लेफ्ट पे होगा वो हमेशा राइट पे जाएगा। नहीं जो भी एलिमेंट हम प्रोसेस करेंगे ना उससे नेक्स्ट एलिमेंट हमें उससे कनेक्ट करना होगा तो उसका जो लेफ्ट होगा हमेशा नल होगा। उससे हम खुद डिफाइन कर देंगे नल और राइट में कनेक्ट कर देंगे जो भी एलिमेंट प्रोसेस जी, होगा। लेकिन वो कैसे करेंगे? वो नल पे पहुंचने के बाद ही हमें पॉइंटर्स मिलेंगे ना। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, तो ये वाला तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। इसके लेफ्ट में भी एक नोड है, इसके राइट में भी एक नोड है, इसके लेफ्ट में भी एक नोड है, इसके राइट में भी एक नोड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ही मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अब लास्ट नोड पे पहुंचो तो मेरे पास एक लेफ्ट फ्री है और एक राइट फ्री है। तो लेफ्ट ऑलरेडी नल को पॉइंट कर रहा है, राइट मेरे पास यहाँ पे खुला है और इसको मैं यूज कर सकता हूँ टू पॉइंट टू अनदर नोड। वो कौन सा नोड होना चाहिए? वो वाला नोड होगा जो कि मेरे पास इसके पेरेंट के राइट पे आता है, ठीक है, राइट मोस्ट पे। आई थिंक दैट्स हाउ वी कैन से इट। तो राइट मोस्ट पे हमने पॉइंट किया, फिर वहां से हमने मजीद कंटिन्यू करना है। यहाँ पे भी ये मेरे पास एक नल है, तो इसके राइट पे कौन सा होगा? अब इसका जो ये पेरेंट तो प्रोसेस हो चुका है, अब इसके राइट वाला जो है उस पे पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट ऑलरेडी नल है और ये राइट पे ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है। तो आई थिंक जिस नोड पे आपके पास राइट पे कुछ भी नहीं है वहीं से आपने एडिशन करनी है, तब आपके पास फ्लैटन हो जाएगा। जहाँ पे आपके पास राइट है आप उसको एज इज रिटर्न कर लेंगे। इज दैट करेक्ट स्टेटमेंट? यानी कि इसके राइट पे मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके राइट पे मैंने ऐड किया है और यहां से मुझे इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि the two is still pointing to this. So I can be pointing to 4 and 2 is still pointing to 4. So once I point 3 to 4, then I can point 2 to null. तो अब 2 के लेफ्ट पे मेरे पास है लेकिन 2 का राइट, तो आई थिंक वी आपके पास that can cause an issue. सर इसका इसमें ये भी है ना जी, कि टू का जो लेफ्ट है वो 3 को पॉइंट कर रहा है तो हमें 2 के राइट पे 3 को पॉइंट करवाना है। ये भी कनेक्शन डिस्टर्ब करना पड़ेगा। राइट। 2 के इसको कैसे करेंगे? या तो हम यहाँ जहाँ पे नल हो जाए वहां पे डमी नोड हम पास करें और डमी नोड में 3 की वैल्यू स्टोर करके उसको रिटर्न करें हम, और फिर वापस आते हुए हम उसका ऑपरेशन करें। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आता है, लेकिन यहाँ से जब हम रिटर्न करते हैं तो 1 के राइट पे हमारे पास है लेकिन लेफ्ट पे नहीं है। डजंट मेक सेंस। यहाँ तो हमने इसको फ्लैटन कर दिया, ठीक है। तो देन हाउ डू वी राइट पे आते हुए देन वी डू, अगर मेरे पास यहाँ पे 1, अगर यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 है एक साइड पे, तो यहाँ मेरे पास 5 और 6 है। तो अब इस 4 के बाद इसका जो राइट है, रिटर्न होते वक्त आई पास अ डमी नोड एंड पॉइंट टू द डमी नोड, not point to the dummy node, I store the value of the dummy node and then do the same thing I did here, ताकि मैं राइट पे पॉइंट करूँ, लेफ्ट मेरे पास नल ही रहे। और व्हाट आई कैन डू इज, अभी इसका लेफ्ट, मुझे 1 के भी लेफ्ट पे नल चाहिए ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर इसका एड्रेस लेके मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगा ताकि 1 भी नल को पॉइंट करे।
it's not making sense. जी, नमीर शाह। सर हम ये कर सकते हैं कि हम करंट राइट को करंट लेफ्ट के इक्वल कर ले और फिर लेफ्ट को नन कर ले, आई गेस। We need all the nodes. We can't just delete nodes. सर बट हमें तो राइट चाहिए ना, लेफ्ट तो नहीं चाहिए। ये तो स्क्यूड है ऑलरेडी, स्क्यूड करना है हमें। राइट को कैसे पॉइंट करेंगे? 2 लेफ्ट पे 3 को पॉइंट कर रहा है. We want 2 to point to 3 on the right side. So if you're suggesting that we point 2 to So we 3 start and from then 3 root to and 4. then we traverse to current root, right? And then current right equal left, current left, and then current left equal none. ऐसा कुछ हो सकता है। Come again. So you're on 1, you come to 2, okay. Then you come to 3, and then you have 4 here, right? And then you have 5, and then you have 6. So if you come to the left, you basically need to shift all of these to the right. This subtree needs to go there. So if we come to the bottom and if we start, our goal should be that this should also end up pointing to, on the left, we should pointing to null. So we really need to move this node on the right side. And then we need to do the same thing. We need to, because this is already pointing to these. So if we can just take care of each node pointing to its parallel on the right side. Like here it makes sense. I can just flatten it to 2, 3, and 4, right? And if I move 2 here, everything else will follow. It's not like I have to do like similar operations for them. But my question is, like, instead of moving 2 there, okay, I want to move 2 there. I want 1 to point to 2, but I also don't want these to go away. Okay, that can be done only when, let me draw this flattened logic. If we can figure that out, I think we have a logic. 1, 2, 3, and 4. Okay. So imagine this is on the right side, and on the left, it's pointing to null. Left, these are pointing to null now. Okay, these are pointing to null. On the right side, I have 5 and I have 6. So what I can do is when I return on this side, this is on the left of 1. So if I can just take care of this node moving there, everything else should follow, right? This is on the right side. This is correct. So what do I need to do in order to make sure that these don't get deleted, right? What we can do is take some kind of node, point these to this node, okay? Move this node to its right pointer, meaning that the one's right pointer moves to this, okay? And then dummy nodes move to this, right? And because if 5 follows along, 6 follows along. And then that's how we end up flattening this 2, 3, 4, 5, 6. Yes. जी बताइए। सर वो ऑलरेडी मतलब हम प्री ऑर्डर कर रहे हैं, राइट? तो पहले लेफ्ट होगा तो लेफ्ट को हम करंट लेफ्ट को हम राइट कर रहे हैं, तो पहले तो हमारा 1 2 3 4 ट्रेवर्स होगा, उसके बाद 5 6 होगा, रूट लेफ्ट राइट। राइट, तो फिर तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए ना, होगा ना? आई गेस। 1 पे हमें नल चाहिए लेफ्ट साइड पे। आप कैसे मूव करेंगे?
ओके, आप कह रहे हैं कि 2 के बाद अगर मैं 5 पे जा रहा हूँ, बट 1 के राइट को आप 2 को कैसे पॉइंट करेंगे? अब 1 के लेफ्ट पे है ना 2, यहाँ पे तो प्री ऑर्डर रिवर्सल में पहले आप लेफ्ट पे जा रहे हैं ना, तो आप लेफ्ट सब ट्री को आपने विजिट किया फिलहाल। तो जब इसको फ्लैटन कर भी लें तो अभी 1 के लेफ्ट पे ही है 2, ये सारे के सारे 1 के लेफ्ट पे ही आएंगे, 1 के लेफ्ट को भी नल करना है। तो इन दैट केस हमारे पास यही बनता है कि हर मर्तबा जब हम रूट पे जाएं तो वी हैव टू पॉइंट द राइट मोस्ट टू सम डमी, या ये अगर मेरे पास रूट है, ठीक है, इसी को लेते हैं 2, 3 और 4 को लेते हैं, ठीक है। नल पे हैं हम, यहाँ पे आए, तो व्हाट वी कैन डू इज इसका जो नेक्स्ट है, यानी ये जो रूट है मेरा, तो रूट डॉट नेक्स्ट को मैं पॉइंट कर देता हूँ किसी डमी नोड को, ठीक है, ताकि वो डमी नोड इसको स्टोर कर ले। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने आ, इसका राइट पॉइंटर फ्री हो गया, ठीक है, राइट पॉइंटर इसका फ्री हो गया, राइट पॉइंटर को यहाँ पॉइंट करूंगा और लेफ्ट पॉइंटर को मैं नल पे पॉइंट कर दूंगा, तो देन 2 मेरा लेफ्ट पे नल पे आ जाएगा और राइट साइड पे मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास राइट पे होने के बाद इसका जो राइट है, दिस शुड पॉइंट टू डमी, so then everything else will follow, then it will point to 4 and 3 will already be null on the, and this will be null anyways, ठीक है, इसके राइट पे। um, अब अगर मैं यहाँ से, यहीं से मुझे करना ना, तो what I can do is इस इसको keep in mind, by keeping this in mind we go back and again we go to its root and point root dot next, root dot right, sorry, root dot right to, we need some kind of dummy node, or we can reuse the same dummy node. Once it's been used, then we don't need it anymore. Okay, so what we can do is when we return, we reuse that dummy node, we point to the what, we point to the root dot right equal to dummy node, we point to that dummy node is pointing to 5, and then what we can do is we can point, this is getting more and more complex. If while we are returning this, every time we return this, what are we essentially doing? From left when we return, then we're using the dummy logic. So when we return from this left, we again reuse the dummy logic. We point, yes, we point our dummy node to this, okay? And then then we point, what we do is we swap here. So right now the one का जो आपके पास root डॉट लेफ्ट है, टू डॉट लेफ्ट है, वो पॉइंट कर रहा है 2 को, राइट। तो व्हाट इफ, और उसका जो रूट डॉट राइट है, ठीक है, वो पॉइंट करे इसको, सो रूट डॉट राइट को हम करेंगे नल कर देंगे, ठीक है, एंड देन रूट डॉट राइट को हम री पॉइंट करेंगे यहाँ पे,
So root dot right, we need to repoint this to root dot left, and root dot left को हम कर देंगे equal to null. That means कि लेफ्ट इसके नल आ जाएगा, इसका जो राइट पॉइंटर इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा. ठीक है. एंड जब रूट डॉट राइट इसको पॉइंट करने लगेगा तो मेरे पास 1 2 3 4 है. ओके, यहाँ पे पॉइंट हो चुका है. एंड देन वी नीड टू पॉइंट दिस टू द डमी नोड which will be pointing to 5. So let's say कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 आ चुका है, ठीक है, और इसके बाद डमी नोड है और उसके बाद 5 है, तो we can just simply do is dot next, right? So this will skip this and this will attach to this. तो इसके राइट को यहाँ पे पॉइंट कर देंगे. That's how we can flatten the tree. So I think the learning is go all the way down to the left, and once you're returning from the left, check if there's something on the right. If there is something on the right, then what you need to do is you need to use the root to use the root dot next, point to dummy, root dot next, or use a dummy to point to root dot next. So you use a dummy node dot next pointed to 4. Sorry, dummy dot next equal to root dot next. Then it will start pointing to root dot next पे कौन सा आता है, ये आता है. ठीक है, तो आपका dummy dot next will be equal to root dot next. यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई. आपका dummy node यहाँ पॉइंट कर रहा है. फिर इसके 2 को you need to repoint, like this one, you need to repoint to the root dot left, and then root dot left need to point to null. So process the left when you're returning. If there is something on the root dot right, point the dummy to the root dot right, and then repoint root dot right to the root dot left. Okay. Now, once you've pointed this, then you can use the left, the last one, point that to the dummy one, and do the dummy dot next. This is the only way I'm seeing right now this can happen. First thing is process left. Okay. While returning, do what? Introduce a dummy node, and dummy dot next is equal to root dot right. Once this is done, second thing what you need to do is root dot left is equal to root dot right, and then root dot left is equal to null. Okay, then you return, and since you have processed this root, you go back to its root and you repeat the same thing. The only challenge is how do you root dot left is equal to root dot right. So root dot left, this needs to point to the root dot right. This is the challenge. How do we get this node to point to this? If we can close this logic gap, I think we can solve it. सर व्हाट इफ हम करंट को रूट के इक्वल कर ले एंड देन वी डू द अदर प्रोसेस. करंट को रूट के इक्वल करने. And what's the other process? ये जो आपने बताया रूट लेफ्ट को रूट राइट एंड देन रूट लेफ्ट इक्वल नल.
I didn't understand. Let me draw this and you tell me. Okay. So I'll put 2 here, 3 and 4. Root को current कर दिया, then Yes, and then current root current को root के equal कर दिया, and we yes. do pre left to pre right. No, you have to be more articulate. What are you exactly trying to say? You can even draw it. Let me allow annotation. I mean traverse करेंगे, अब traverse लेफ्ट पे मुझे नहीं जाएंगे। पता। हाँ, तो हाँ, फिर हम प्री लेफ्ट को राइट को कंसिडर कर लेंगे, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है कि रूट लेफ्ट इक्वल रूट राइट। So you're saying that after we arrive at the, no, we have to keep the left order. Pre-order, we have to traversal it. You're saying point 2 to 3 and then 3 to 4. See, eventually we have to move this 3 to the right, okay? And then 4 to the right of the 3. And then all these should be pointing on the null to the, on the left to the null. So it only makes sense. We go hit the bottom and build on the way back up. So we find the last node, we return it from the recursion, and then process it with a dummy node, repeat the same thing. And every time a parent gets pushed to the right, the children also get pushed to the right. The order does not change. So what I'm trying to imply here is, let me not clear this. I'm trying to imply there is 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3, and then 4. So once I push 2 here, everything else will follow. Okay. So I think essentially I'm trying to say, I think I drew it wrong. Let me draw it again. If I flatten this part of the tree only, 1 and okay, 2 and 3 and 4, okay? And here the lefts are pointing to null. Lefts are pointing to null. Now, if I, now this 2 is to the left of 1. On the right side, let's say there's a point and there's nothing. If I start pointing this right to 2 and this left to null, what's going to happen is that everything else like 3 and 4 will move on the right side as well. Meaning 1, 2, 3, 4. Everything will be on the right pointer. Like 2 will carry all these along with it. Parent will carry the children. And everything else on the left will be null. Null. So that's how we have to do. Every time we return, we look at what's there on the right and we only compare it with the root. We only process with the root. अगर हर parent अपने children's को उसमें लगा रहा है, कतार में लगा रहा है, तो I don't need to like worry about all the details. मुझे सिर्फ ये करना है कि एक parent के जो 2 children हैं, ठीक है, अगर हैं, तो क्या वो दोनों children जो हैं, are they, first of all, हर एक child क्या it's being pointed on the right, and is it pointed to the next child on the right? And on the each child has left on the left, null on the left side. If I can ensure this, I can carry this logic, carry this thing all over back to root and apply on all the parts of the binary tree. So I think this is what we have to do. हमें एक डमी नोड चाहिए होगा जिसमें हम टेम्परेली स्टोर कर सकें, और बाइनरी ट्री में आपके पास हर एक पेरेंट नोड के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, चाहे आपके पास टोटल 1000 नोड्स या लाखों नोड्स क्यों ना हो, लेकिन हर एक लेवल पे मेरे पास जो इमीडिएट चाइल्ड है सिर्फ मैंने उसकी टेक केयर करनी है. तो दैट विल मेक श्योर आई विल हैव समथिंग लाइक दिस. जब जितना मैं ऊपर चलता जाऊंगा मेरे पास फ्लैटन होता जाएगा, तो यहाँ से फ्लैटन होकर यहाँ तक पूरे का पूरा फ्लैटन हो जाएगा. यानी कि मैं जब इस पैरेंट में आया तो मुझे सिर्फ इन दोनों की टेक केयर करनी है.
इस पेरेंट पे मैं आऊंगा तो मुझे सिर्फ इन दोनों की टेक केयर करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी टेक केयर 2 कर रहा है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जब मैं आ जाऊंगा, मुझे इसका लेफ्ट और इसका राइट चेक करना है। लेफ्ट पे नल है, कोई मसला नहीं, आगे जाओ राइट पे। ठीक है, तो फॉर राइट वी कीप कंटिन्यूइंग if we don't have anything on the left. If you have something on the left, right, so then it's something to worry about. We can revisit this question tomorrow. I'll try to see if I can find some time to actually solve this. But अपने end पे भी try करें इसको and see if you can come up with some solution. ठीक है, सॉरी मेरी प्रिपरेशन नहीं थी इसमें, तो इसलिए दिस इज लाइक अ जी। मैम आयशा, आप कुछ कहना चाह रही? जी सर, सेशन का टाइम हो गया तो मैं एंड करने लगी हूँ। जी जी बिल्कुल, आप एंड करें। ठीक है।